क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल के बियॉन्ड जाती हूँ, इफ आई एम हियर समवेयर, दैट मीन्स मैं गुड टू को रिड्यूस करा रही हूँ, विच मीन्स मेरी गुड टू जो है वो इंफीरियर या गिवन है। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से मेरा गुड टू का कंजम्पशन डिक्रीज कर गया, यू नो, माई गुड टू इज फॉलिंग। और अगर मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ तो मेरा x1 जो है वो इंफीरियर या गिवन है, क्योंकि इनकम इंक्रीज करने से मेरा कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। बट ऐसा नहीं है, कॉब डगलस है, कॉब डगलस में x1 x2 दोनों क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। अगर x1 x2 दोनों नॉर्मल हैं तो इसका मतलब E1 will lie between this area, and we know E1 का point is nothing but, what's the point of E1? Is 50, 10. E1's point is nothing but 50, 10, which means it is somewhere here. This is my point of E1. This point is nothing but 50, 10. So my journey from E0 to E0 dash is substitution effect. The journey from E0 dash to E1 is income effect. Right? So that is all there is in Slutsky. आई होप ये ट्राइंगल आपको समझ में आया जो मैंने ड्रॉ किया स्लट्सकी का, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं यहाँ पे या वहाँ पे तो हमारा दोनों में से एक गुड का कंजम्पशन कम हो जाता है, और इनकम इंक्रीज करने से नॉर्मल गुड का कंजम्पशन इंक्रीज होना ही होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ स्लट्सकी इज डन. लेट्स टॉक अबाउट हिक्स इन द सिमिलर प्लेटफॉर्म. हिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? हिक्स के अंदर m dash is such that it is tangent to the same IC. M dash is such that it is tangent to the same IC, which means my utility is constant. So utility at E0 is how much? Utility at E0 is 25 into 10. क्यों? क्योंकि U is equal to X into Y है ना? 25 into 10. So my utility is 250. So जब मैं E0 dash निकालूंगी तो E0 dash पे भी utility मेरी 250 ही होनी चाहिए, except that the point of x will be x dash and the point of y will be y dash, which I don't know what it is. Also मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो बजट लाइन होगी वो नई वाली होगी, which will be 1 into x plus 5 into y is equal to some m dash. Let me call this m dash h because ये compensated income है h की. मेरे पास ये constraint है, right? मेरे पास ये constraint है. अब क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? Yes. I know y dash upon x dash is equal to 1 by 5. That means that can I write y dash to be equal to x dash upon 5? Which means that I can write 250 is equal to x dash into y dash is nothing but x dash upon 5, which means that x dash square is equal to 250 into 5, which means x dash is nothing but under root of 5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5 into 5 into 2. 5 5 the 25, 25 into 10 is 250 into 5. So that is how now. So this and 2. That means it is 5 into 5. This is 25 under root 2 is my x dash. And similarly my y dash will be 25 under root 2 upon 5 because it is x dash upon 5, right? Which is 5 root 2. So my E0 dash will be the point will be 25 root 2 in 5 root 2. So again let's make the diagram. So अभी मैं initially किस पे हूँ? AB पे हूँ. AB में मेरा point कौन सा है? E0, which is nothing but 25, 10. Hicks says that मेरे को purchasing power इस तरीके से compensate करनी है that I want the same IC. So that come from E0 to E0 dash. E0 dash में my point is 25 root 2, 5 root 2. Little more of x, little less of y. Again मेरा जो E1 आएगा वो इस triangle के अंदर आएगा and E1 is again same as Slutsky which is 50, 10. So I hope this makes sense. हम लोगों ने diagrams कर लिया, numericals कर लिए. I want to do one more numerical for Slutsky ताकि आपको एकदम Slutsky absolutely clear हो जाए. उसके बाद आप उसका Hicks खुद भी try कर सकते हो. नहीं समझ में आएगा तो हमें reach out भी कर सकते हो. I will give you the answer for that one. But I would like you guys to try it yourself. Okay, let's do one more question. U is equal to x square y subject to 2x plus y is equal to 100 and price of good 1
increases to 4? That's the question. E naught, maximize u is equal to x square y subject to this. My last bundle E1 will be u is equal to x square plus x square y subject to 4x plus y is equal to 100. Again, 2xy upon x square is equal to 4. This is cancelled with 2. This square gets cancelled here. So y is equal to 2x. When y is equal to 2x, then x is nothing but 100 by 6 and y is nothing but 100 by 3. So I have my original bundle, I have my new bundle, I have to only find E naught dash. So let's find E naught dash for Slutsky. Let's find E naught dash for Slutsky. For E naught dash of Slutsky, we have to find M dash. M dash is nothing but new prices for E naught. You know, I'm writing it again and again. जब भी हम क्वेश्चन करते हैं मैं हमेशा ये चीज़ लिखती हूँ ताकि आपके मन में आपके जहन में बैठ जाए. ठीक है, तो न्यू प्राइसेस फॉर द सेम E naught. E naught क्या है? 100 by 3, 100 by 3. Prices क्या है? 4 into 33.34 plus 1 into 33.34, which is means it is nothing but 5 into 100 by 3. So 500 by 3, 500 by 3. So I have to do u is equal to x square y subject to 4x plus y is equal to 500 by 3. So y is equal to 2x है, हमें पता ही है. So x is nothing but 500 upon 18 and y is nothing but 500 upon 9. Alright, so you can calculate these points. This is what Slutsky for this question is. So I hope Cobb-Douglas is really clear. आप लोग इसका हिक्स भी ट्राई कर सकते हैं. सेम मेथड लगेगा. आपको सिर्फ E naught dash को कैसे निकालना है? By making utility constant. How do you make utility constant? आप utility निकालते हो E naught पे, उसको बोलते हो कि वो E naught dash पे भी सेम होगी. And that's it. You just calculate according to the ratio there. So this was Cobb-Douglas. हम यही same analysis. When I say same analysis, I mean exactly the same way. हम लोग perfect substitutes में भी करेंगे और perfect complements में भी करेंगे और quasi-linear में भी करेंगे. Before we move on to the other aspects of this chapter, which is inferior and given. So in the next video, when we do perfect substitutes, we will do the same thing. अगर ये समझ ना आए एक बारी में तो please 2-3 बारी ज़रूर कर लेना. Actually, every video should be done 2 or 3 times. और उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद क्वेश्चन आपको खुद अपने आप भी सॉल्व करके देखना चाहिए कि एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आया, to make the understanding really complete. All right, so I will see you in the next video for perfect substitutes. Thank you.